आपकी स्टोरी को अगर एक संक्षिप्त कंक्लूड करना चाहूं तो मैं ऐसे कह सकता हूँ, एक वन स्मॉल टाउन हिंदी मीडियम गाय टू IIM अहमदाबाद। क्या there was a terrorist attack and the same platform which we left 5 minutes back, same platform पे फायरिंग हुई थी। अगर उस दिन हमने वो ट्रेन नहीं ली होती, क्योंकि हमारा फर्स्ट डिसीजन था, जो 420 रुपए नहीं दिए, 420 रुपए नहीं दिए होते तो शायद मैं आज नहीं होता। ये कंफर्म है, शायद मैं आज नहीं। आप लाइफ में किसी बुरे फेज में है, आपको लग रहा है कि मैं सही जगह नहीं हूं, सो डोंट फील बैड अबाउट इट, बिकॉज व्हेन यू विल कनेक्ट द डॉट्स, जब आप फ्यूचर में जाओगे, व्हेन यू विल कनेक्ट द डॉट्स, देन ओनली यू विल गेट एन आइडिया। First trimester we had around 17 subjects and I got backlog in 10 subjects. That's not because I had less understanding of the subject, but it's because I couldn't write in English. So hello everyone and welcome to our new show Asal Hustle, a series showcasing some real life stories of people who have actually made their way from the scratch to the top. Asal Hustle. Asal means real and hustle means मेहनत। वो लोग जिन्होंने असली में मेहनत करके अपने फर्श से अर्श तक का सफर तय करा है। Despite of all the adversities, despite of all the challenges that life threw at them, they made their way, they somehow managed to make their way from the scratch to the top. And the first guest of our show is none other than but my brother Yogesh Sharma. So welcome Yogesh sir. Should I call you sir or just भैया? कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है? Yeah, no, you can call me Bhaiya, as general you call me. And such a glamorous introduction of the show. I'm really happy to be part of it. So guys, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दूं योगेश सर का। So योगेश सर भी आप लोगों की जैसे, आप में से कई लोगों के, मेरे कई सारे स्टूडेंट हैं, उनकी तरह एक छोटे से हिंदी मीडियम स्कूल से इन्होंने पढ़ाई करी है। आई गेस 1 मंजिल या 2 मंजिल की एक छोटी सी स्कूल थी आपकी पतली सी गली में, एक छोटी सी हिंदी मीडियम से स्कूल से इन्होंने पढ़ाई की है। बट राइट नाउ ही इज होल्डिंग ए पोजीशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन एन MNC, वन ऑफ द बिगेस्ट जर्मन बैंक्स इन द वर्ल्ड। He is holding a position as vice president, which is quite commendable. He is also pursuing his executive program in management from the top notch, from the topmost management institute of India, IIM Ahmedabad. So basically मैं आपकी स्टोरी को अगर एक संक्षिप्त कंक्लूड करना चाहूं तो मैं ऐसे कह सकता हूँ, एक वन स्मॉल टाउन हिंदी मीडियम गाय टू IIM अहमदाबाद। क्या हम उसको ऐसे कह सकते हैं, हिंदी मीडियम टू IIM अहमदाबाद? डेफिनेटली कह सकते हैं। आई थिंक मेरे जैसे बहुत भाई लोग हैं, बहुत स्टूडेंट्स हैं जो मेहनत कर रहे हैं। बट हाँ, आई एम वन ऑफ दोस, आई डोंट नो वेदर वी कॉल इट लकी और हार्ड वर्किंग, व्हाटएवर वे, व्हिचएवर वे वी कैन कॉल इट। सो एक बार मैं स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि मेरा क्या मोटिव था इस सीरीज को स्टार्ट करने का, असल हसल को स्टार्ट करने का। It is just because of few people. It is because it is based on the requests, the comments, the messages that I was getting from you all कि सर मैं भी सीए करना चाहता हूँ, मैं आपकी तरह सीए बनना चाहता हूँ, आपकी तरह बोलना चाहता हूँ। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सर मैं हिंदी मीडियम स्कूल से हूँ, सर मैं गवर्नमेंट स्कूल से हूँ, क्या मैं सीए बन सकता हूँ, क्या मैं एमबीए कर सकता हूँ, सर मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, मेरे को स्कूल में वैसा माहौल नहीं बन रहा, क्या मैं जीवन में कुछ कर पाऊंगा? सो मैं आप लोगों को बताऊं, ही वॉज क्वाइट हम्बल, ही वॉज क्वाइट रिलक्टेंट, वो नहीं आना चाह रहे थे शो पे। But I said to him that your story is quite inspiring to me, and I believe your story is definitely going to be inspiring and motivating to a lot of students out there who are studying in Hindi medium, some backward schools, and not just students, to all those people who haven't backed a good MBA college या कोई अच्छा कॉलेज उन्होंने बैक नहीं कर पाया है, and they think that हमारी लाइफ तो यहाँ पे एकदम खत्म हो गई है. So your story is definitely going to be inspiring and motivating to all those people out there. Thank you. And in case आपकी पर्सनैलिटी के सामने मैं डर के कुछ भूल ना जाऊं, so I have jotted down all the questions जो मेरे को आपसे पूछने वाला हूं. So I have jotted down all the questions. तो एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे. ये पहले नहीं बताया. Can I see? What are the questions? नहीं prepared. ये एकदम प्रॉम्प्ट क्वेश्चंस है और आंसर्स भी प्रॉम्प्ट होने चाहिए, मतलब नथिंग थॉटफुल. तो मैंने आपसे एकदम सीक्रेट रखा है. मतलब द स्टोरी शुड गो एज इट इज, एकदम रियल होनी चाहिए कि क्या हुआ है लाइफ में, कैसे आपने उस चैलेंजेस को ओवरकम करा है. कुछ भी थॉटफुल नहीं होना चाहिए, तो प्रॉम्प्ट आंसर्स होने चाहिए. सो वी विल कीप इट क्वाइट इंटरेस्टिंग. या
So the first question, did you face any problems while you were in school? हिंदी मीडियम स्कूल? यार स्कूल में तो क्या प्रॉब्लम है, बिकॉज हिंदी मीडियम, हर कोई हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है, सब लोग खेल रहे हैं, हिंदी में ही बात कर रहे हैं, तो स्कूल में ऐसा कोई इशू नहीं था, ऐसा कोई चैलेंज नहीं था। I will rephrase this question. Actually, it was a stupid question, I know. स्कूल में तो क्या प्रॉब्लम होगी? My actual question is, did you face any problems after your school when you were pursuing your post graduation in management? तब आपको क्या दिक्कतें आई थी एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट होने के कारण? आप जो आपके साथ जो पढ़ते थे उन लोगों को नहीं थी, क्या प्रॉब्लम्स थी? डेफिनेटली ये काफी बड़ा चैलेंज था, बिकॉज नॉट ओनली स्कूलिंग बट मेरा ग्रेजुएशन भी मैंने हिंदी मीडियम से ही किया था। सो जब मैं पोस्ट ग्रेजुएट इन मैनेजमेंट आया, सो ऑब्वियसली आफ्टर योर एमबीए यू विल वर्क फॉर एमएनसीज, इंग्लिश कल्चर है, इंग्लिश हैज बिकम नॉट ओनली इंटरनेशनल बट एन इंडियन लैंग्वेज ऑल्सो। So yeah, initially there was a lot of difficulties. In fact, I had written my papers in Hindi in graduation. Okay. So one of the interesting facts I would tell you is that when I started my post graduation, first trimester we had around 17 subjects and I got backlog in 10 subjects. That's not because I have less understanding of the subject, but it's because I couldn't write in English. Wait a minute. How many backlogs? 10 backlogs. 10 backlogs. And guys, ये आज पता लग रहा है हमको। मुझे लग रहा है मेरे को मेरे पापा को बताना चाहिए कि केवल हमने क्यों पढ़ती थी सीए फाइनल में फेल होने पे डांट। तो 10 backlogs थी आपकी 17 में से। Nothing to be proud of, but yes. 10 backlogs out of 17. Great. So 10 backlogs out of 17, you definitely face challenges. How were you able to overcome that? जो आपका एक क्या कह सकते हैं एक पीछे खींचने वाला पॉइंट था कि आप हिंदी मीडियम से थे। How were you able to overcome that? Yeah, so basically I moved from Jaipur to Pune. I was staying alone in hostel with friends. So honestly speaking, we could probably give a structure what I really did, but like I said, there was no option. You gotta do what you gotta do. Then backlogs away, it cannot continue. I used to talk to myself. Maybe I had to work harder than my batchmates, but I did that. I mean, sometimes what I did, I used to start writing papers also myself, just so that I get practice, because I didn't have practice of writing in English. And I know that it was really not that difficult also, because like, I don't know if you are aware, again you will say that you will inform my father, but please don't. I got 4 backlogs in trimester 2, definitely an improvement, again nothing to be proud of. And then the backlog basically dropped off to 2, 1, and gradually in final trimesters there was no really backlog as such. And yeah, I was able to clear all those backlogs because, like I said, that the real reason was not really understanding of the subject, but the issue was with English communication. So आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है हिंदी मीडियम स्कूल से, उसके बाद में आपने बताया 10 से 17 बैकलॉग आई, फिर 4 हुई, फिर 3 हुई। यू समहाउ मैनेज्ड कि कैसे आपको अपनी इंग्लिश की उस दिक्कत को दूर करना है। 10 से 4, 3, 2 हुई। उसके बाद में आपने एमबीए करा, आपने बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब करी, वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पे आप पहुंच गए। अभी आप अपना एमबीए कर रहे हो आईआईएम अहमदाबाद से, एंड यू आर प्लानिंग समथिंग बिग। आई नो बहुत अच्छे, आपको आगे जाना है। विल नॉट टॉक अबाउट दैट, जब हो जाएगा तभी बात करेंगे। सो क्या आपने कभी सोचा था कि आपको मेरे शो पे आने का मौका मिलेगा? डेफिनेटली नहीं सोचा था, बिकॉज मैं जब एमबीए करने गया था या कॉलेज टाइम में था तो ये बहुत छोटा बच्चा था। सो डेफिनेटली ये तो कभी नहीं सोचा था कि he will start with such a good intent that he wants to help students. And I actually get to know, because I don't stay in Jaipur, but I get to know that how he works really hard in the night also, midnight also. He's preparing subjects and giving tuitions to students free of cost. And like he said, that when he started talking about this particular subject, that he wants to start a series, of people who've done well and are still an inspiration. So I was initially not really in favor, because I still believe that there's a lot to do and there are a lot of other people who've done better. But yeah, I mean, lucky and privileged to be part of this show. I hope that this show goes to greater heights and I also continue to grow, so that next time also I get chance to be part of your show. Definitely you are going to be a part. Yeah. And so आपने ये बताया कि आपने कैसे उस इंग्लिश के उसको ओवरकम करा। somehow you managed to clear your backlogs, आप कैसे तैसे पढ़ाई करें। somehow you managed to get a job also in campus. I know, मेरे को तो पता ही है।
आपकी फर्स्ट जॉब लगी थी, कंपनी का मैं नाम नहीं लूंगा, बट घर पे सब लोग बहुत खुश थे कि हमारे घर का बड़ा बेटा, जिसके लिए हम, देखो यार मिडिल क्लास फैमिली से है, मेरे पापा अखबारों का काम करते थे, मेहनत करके हम लोगों को पढ़ाया है, तो घर में सब लोग बहुत खुश थे, मिठाइयां बट रही थी कि घर का सबसे बड़ा बेटा भी जॉब लग चुका है। somehow we managed to do that and हम सब लोग खुश थे, we were very proud of you and I still know that day, हम सब लोग इतने खुश थे। 2 दिन पहले ज्वाइनिंग के you got a mail that your offer has been revoked। तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे कि इतनी मेहनत करके आप कैसे तैसे पहुंच भी गए, ऑफर भी आया और उसके बाद में जो आपको जॉब मिली वो ऑफर रिवोक हो गया और यू वर लेफ्ट विथ नथिंग बट डिसअपॉइंटमेंट कि यार कोई जॉब ही नहीं है, एंड भी हो चुका है। या आज अगर मैं उस चीज के बारे में सोचता हूँ, एंड दिस विल हैपन विद एवरीवन, व्हेन यू रियली लुक बैक आफ्टर 5 years 6 years, you feel that there was nothing. But yes, you are right. If I go really back to that point in time, it was disappointing. It was a setback, basically, because, and it was not only for me. I passed out my post graduation in 2009. That was the time of recession. Yeah, So, in okay. fact, in my college, approximately 17 offers were revoked. I obviously cannot take name of the companies, but 17 offers was not easy thing because recession की वजह से companies वैसे ही नहीं आ रही थी campus में, and जो थोड़ी बहुत आई 60-70 whatever, I don't really remember the number, उसमें भी 17 offers revoke हो गए थे. So that was definitely a setback. I had to go back to, because I had come here in Jaipur for a winter project because I had got my job. So मेरे जैसे और 17 लोग थे जो different places पे थे, और maybe somebody must have been there in Pune also. Everybody has to go back to Pune and then restart the journey, right? You know, you have to sit for the companies which are coming to the campus, and companies वैसे भी नहीं आ रही थी campus में. So it was very disappointing time, and I have seen, you know, friends fighting with each other, friends getting frustrated because that was such a time. And I think it is not only in my college but across all colleges. Yeah. सो कंपनी का ऑफर रिवोक हो गया था, मैं तो जानता हूं आपकी जर्नी के बारे में, तो हमारे जो ऑडियंस है उनको आप बताना चाहोगे आपकी फर्स्ट जॉब के बारे में? आई नो आप शायद थोड़ा सा नहीं चाहो बताना, बट जैसा मैंने बोला स्टोरी एकदम रियल होनी चाहिए, उनके पास में रियल मैसेज जाना चाहिए कि हाँ लोग बाग सच में कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं। तो आप अपनी फर्स्ट जॉब के बारे में बताना चाहेंगे? So after going back to college, I appeared for multiple, you know, companies. Obviously, as I said, that companies were not coming in campus. So hum basically just like hawkers and salesmen, we were actually going into different companies asking if you have a job. Yeah, exactly. In fact, I have traveled to Mumbai also, and maybe we will not really talk about it because it's not really important. But you know, I traveled to Mumbai first time on 26 November 2008. The terrorist attack when it happened. So it was, you know, more frustrating because, you know, you are traveling in local train and such things are happening and you are stuck somewhere. Yeah, but anyway, I mean, coming back to the topic. No, I will write down this point. We'll definitely talk about this also. Okay. Terrorist attack. So what is the question? Sorry. My question was about your first job. Yeah, your first job. Yeah, so after appearing for multiple, you know, companies, failures, like I said, recession is not only threat for companies or people, but also an opportunity for a lot of companies also. So one of the MBA entrance exam institute, coaching institute, they came to our campus, and I got an opportunity. There were 3 or 4 of us people who got our, you know, first opportunity after this mishap which happened. So हम लोग फिर हमने हमारा करियर बेसिकली वहां से स्टार्ट किया था. So initially they offered a package of around 3 lakhs per annum, but that was more like, you know, you will be on probation period, you will get a salary of 12,000 per month. So 12,000 per month. That's where I started. Yeah. To be noted, 12,000 per month where we started. Okay. So हाँ, अभी जब आप बता रहे थे आप थोड़ा सा बह गए थे, तो उस पॉइंट पे भी मैं आना चाहूंगा रिगार्डिंग 2008 when you traveled to Mumbai, your first experience of Mumbai. आप मुंबई जा रहे थे और जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, क्योंकि हर चीज जानना जरूरी है, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? मुझे पता है वो 10 मिनट का फासला था टेररिस्ट अटैक से, कुछ भी हो सकता था, बट यू नो गॉड इज विद अस. So maybe since you are insisting, like I still believe that it may not be really relevant, but if you are insisting, I'll probably give a small snippet of the story. So there were no jobs, there were no companies coming. Our director of institute said that go out and you know, start appearing for companies, interviews. So
We planned certain interviews. We directly walked in also. So there were that day, 26 November 2008. I still remember there were around 18 of us who traveled from Pune to Mumbai. It was divided into two batches or two groups basically, mostly like friends and all they get into. So I was in a group of 6 people, and post completion of 4 or 5 interviews, almost everybody at an average, we thought since we are here in Mumbai, so why not let's explore. And that was first time, so we didn't really know much. So some of our friends who knew their friends, उनसे पूछा तो उन्होंने बोला मरीन ड्राइव एक बहुत अच्छा स्पॉट है जहाँ पे आप जा सकते हो. सो अराउंड 7:30 के आसपास हम लोग मरीन ड्राइव उस टाइम पे पहुंचे थे. एंड वहां पे थोड़ी देर तक बैठे, कुछ एक्सप्लोर किया, इधर उधर कुछ खाने वाने का एंड ऑल. आई थिंक हमने एक ट्रेन बुक कराई थी विच वॉज एट 9:55. सो अराउंड 8:30 हमको वहां से निकलना पड़ा. वी एक्चुअली गॉट लेट बिकॉज वी डिडंट हैव आइडिया, बिकॉज आप पुणे जयपुर जैसी सिटीज में आपको इतना ट्रैफिक मिलता नहीं है जितना मुंबई में रहता है. 8:30 बजे निकले, हम एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचे. 9:55 की ट्रेन थी, आई थिंक हम 9:50 पहुंच गए थे, इनफैक्ट 5 मिनट पहले ही पहुंचे थे. But the problem was with seats, because when you are a student, you don't really spend so much amount on seats, right? So it was not sleeper, it was a general seat. Okay. I still remember maybe 80 rupees, something like that. We had obviously, few of our batchmates who were girls also, and we really couldn't adjust. So we thought that we'll skip this train, we'll catch the another train. इतने में fortunately, भगवान जैसे बोलते हैं ना कि अवतरित होते हैं या फिर कोई फरिश्ता भेजते हैं, टीटी हमारे पास आया. उसने बोला कि ठीक है आप 6 लोग हैं, मैं 70 पर सीट लूंगा, 420 रुपीज. नंबर इज वेरी वियर्ड, 420, बट 420 रुपए उसको देके हम लोग फाइनली ट्रेन में बैठे. ट्रेन आई थिंक 9:55 पे एग्जैक्टली स्टार्ट हो गई थी, और 9:55 9:56 हमको कुछ आइडिया नहीं था तब तक. अराउंड दादर ऑलमोस्ट 30 मिनट्स पहुंचने के बाद में सडनली फोन बजने चालू हो गए. एंड इट वाज वेरी वियर्ड इंसिडेंट्स बिकॉज वी डिडंट नो एनीथिंग व्हाट इज हैपनिंग. सो मेरे फोन बज रहे हैं, मेरे साथ में बैचलर्स के फोन बज रहे हैं, एंड ट्रेन में सबके फोन बज रहे हैं. तो लाइक हुआ क्या है. एंड दैट टाइम वी गॉट टू नो दैट देयर वाज अ टेररिस्ट अटैक, एंड द सेम प्लेटफॉर्म व्हिच वी लेफ्ट 5 मिनट्स बैक, सेम प्लेटफॉर्म पे फायरिंग हुई थी. अगर उस दिन हमने वो ट्रेन नहीं ली होती, जो कि हमारा फर्स्ट डिसीजन था, जो 420 रुपए नहीं दिए होते, तो शायद मैं आज नहीं होता. ये कंफर्म्ड है, शायद मैं आज नहीं होता, बिकॉज सबसे ज्यादा लोग जो अनफॉर्चुनेट है जिनकी डेथ हुई थी वो उसी प्लेटफॉर्म पे हुई थी, बिकॉज टेररिस्ट ओपन फायर. इट वाज अ वेरी टफ टाइम फॉर. या आई एग्री. एंड इनफैक्ट वी रीच्ड पुणे बाय 2 a.m. sorry, and I informed the same time. I called my father and he was also kind of giving weird reaction कि रात को फोन क्यों किया. But then I knew that morning में न्यूज आएगी, and if there is a network issue and all, so because generally in such cases they jam internet network and all. So वो इन्फॉर्म किया था. So that is the quick and short story. So हमारे उस पॉइंट से वापस से हमारे मुद्दे की तरफ आते हैं. So you started your journey with एक MBA इंस्टीट्यूट से आपने कैसे तैसे, जो एकदम अपोजिट है, एकदम इररिलेवेंट है आपके जो आपने MBA में पढ़ा, एक MBA इंस्टीट्यूट पे आप पढ़ाना चालू करे, जस्ट ऐसी छोटी सी आपने जॉब स्टार्ट करी 12,000 रुपए महीने की. Then somehow you managed, somehow you were able to make your way. You started your career with, if you allow, can I take the name of the company? Yeah, I had worked with that company earlier, so you can take that. So he started his journey with Citibank, one of the most renowned banks. You started your journey with Citibank as in sales, right? Yes, absolutely. And then वहां से जर्नी स्टार्ट हुई, एंड वो आप बताना चाहेंगे क्विकली कि आपकी स्टोरी कि आप Citibank से कैसे स्टार्ट. It's very interesting aspect that you are touching, and definitely I would talk about it. I am a science graduate. I did my MBA into marketing. And obviously started my career in sales. उस टाइम पे बहुत irritating था, because sales में it's very irritating that you are going to people. इतना बुरा नहीं था fortunately, because I was handling HNI clients, but still it was a little bit problematic that sometimes you have to go to societies, put cans and talk about credit cards, insurance and other things. But like I said again, right, when you actually look back, so today when I look back, connecting the dots, today when I look back, I think I was really lucky to start my career with sales. Because that's where I got an opportunity to interact with clients, their expectations, how do we really communicate, right? So those all skills actually I learned in that particular role for 2 years. मतलब it's sometimes we feel like हम कहाँ पे हैं, हम कहाँ पे अटके हुए हैं लाइफ में. Yes, I was. But you don't know कि वो क्या चीज, when you connect the dots, then only you realize कि हमने वहां से क्या सीखा है. इस मोमेंट पे आपको समझ नहीं आएगा कि यार why life is throwing this to me, why am I here, why am I stuck over here.
सो पॉइंट टू बी नोटेड ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स कि अगर आप लाइफ में किसी बुरे फेज में है, आपको लग रहा है कि मैं सही जगह नहीं हूं, सो डोंट फील बैड अबाउट इट, बिकॉज व्हेन यू विल कनेक्ट द डॉट्स, जब आप फ्यूचर में जाओगे, व्हेन यू विल कनेक्ट द डॉट्स, देन ओनली यू विल गेट एन आइडिया दैट व्हाट गॉड वाज ट्राइंग टू शो यू, ट्राइंग टू टीच यू। एब्सोल्युटली। सो एक सबका एक फेवरेट कोट होता है, मेरे बहुत सारे कोट है, तो आपका फेवरेट कोट क्या है जिससे आप मोटिवेट होते थे टू गो कि यार कुछ करना है? व्हाट वाज योर फेवरेट कोट? Quotes actually बहुत सारी है as such, but since you are asking prompt questions, I think one of the quotes which really inspired me just after my MBA, it was this. I think it was from Winston Churchill, if I'm not wrong, but please give due credit to whosoever said it. So they said it. It was said like this: that success is not final, failure is not fatal. It is the courage to continue that counts, or it's the journey that counts, right? A lot of time it happens that we feel that we've achieved something, but that's not the end of it. A lot of time similarly we don't really do with failures. When failure happens, we don't do it. So failure is also not fatal. It's just one part of the journey. It's a journey that counts. That I think is one of my favorite quotes. Great. Like it's also like fall 7 times, get up 8. 7 बार गिरे तो 8 बार उठो. It's the courage to continue that counts. Yeah. Okay. Now coming to your IIM experience, like जो भी कॉर्पोरेट में जो भी बंदे होंगे, स्टूडेंट्स को शायद इतना आइडिया नहीं हो, बट जो भी कॉर्पोरेट में बंदे होंगे वो भी सोच रहे होंगे कि लाइक कई लोग आईआईएम से होने के बावजूद भी बहुत टाइम उनको लग जाता है जिस पोजीशन पे आप हो एज अ वीपी इन वन ऑफ द बिगेस्ट जर्मन बैंक्स इन द वर्ल्ड। सो ये आईआईएम का कनेक्शन कहां से आई? ऑलरेडी बैक द गुड पोजीशन, आप अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है, देन व्हाई यू चोज आईआईएम अहमदाबाद? Interesting question. Actually, a lot of people ask me this question. I just wanted to, before coming to actually answer this question, just wanted to correct. I think we called MBA, but it's an executive management program, not exactly an MBA. But yeah, it's an interesting question. A lot of people ask me. Honestly speaking, when I thought to pursue for this program, not really, all my friends and family were really interested. But there is a cost and not time. Not me. There is obviously cost and time and efforts, involved. That's why. But see, I was very clear, and you are right. Actually, you are quite right, because I actually, have taken campus interviews for IIMs, and I know for a fact that people may not really reach to a higher level after, doing their MBA from IIM. They may, obviously, some exceptions, and some may not really reach to a VP level also. So yes, you are right. It was a well thought decision. I knew that it may not really help me in my career, but there were other things. One point is obviously, I keep telling to a lot of people who come for mentoring, is the constant learning, the way technology is changing, the way process is changing. So that was the first point, that constant learning. I wanted to go back to the B school and wanted to remind of all these concepts, and you can call it second point or maybe extension to the first point. Faculty from IIM, right? They are anyway, and institute is also well renowned. So third point is the branding, and fourth point, which is most important for me, is the networking. Because I get to network with people with very vast experience. I'm from banking. I now get to interact with somebody from IT. I get to interact with from pharma industry, and I may have experience of only 14 years, but I am interacting with people with 20 to 25 years of experience. Such a different, perspective. I'm actually, there are people who are entrepreneurs in my batch, and multi-crore revenues they have. So you basically definitely, set some expectation. You basically set some learning experiences from them. So yeah, these were the 4 reasons which I would like to quote. So networking, ये point मुझे बहुत अच्छा लगा. Point to be noted. वो कहते हैं ना कि संगति का असर पड़ता है. एक फेमस कोट, आई डोंट नो फ्रॉम हूम, बट एक फेमस सेइंग है दैट यू टेल मी अबाउट योर फ्रेंड्स एंड आई विल टेल यू हु यू आर. You are just a sum of the 5 people you meet daily in your life. So networking वाला आप एक बहुत अच्छा पॉइंट बताए हो. You chose this to pursue your executive program in management from IIM Ahmedabad to interact, to network with those people वो एंटरप्रेन्योर जो मल्टी करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं, उनकी सोच क्या है, उनसे मिलके हम भी वैसी सोच लेके आ पाए. सो पॉइंट टू बी नोटेड दोस्तों, अपने फ्रेंड सर्कल का ध्यान दो. और जब मैं आपको बोल रहा हूं कि अच्छे फ्रेंड्स बनाओ, इसका मतलब मेरा ये मतलब नहीं है कि जो पुराने दोस्त हैं उनको छोड़ दो. आप अपनी सोच अच्छी करो,
जो आपके पुराने दोस्तों पे भी फर्क पड़े। ऐसा नहीं है कि गंगाधारी शक्तिमान है, आप ही उनको बिगाड़े जा रहे हो, बट अपने फ्रेंड सर्कल का ध्यान जरूर रखो, अपने नेटवर्किंग का ध्यान जरूर रखो। यू आर हु यू मीट। जो आप खाते हो वो आपका शरीर वैसा बनता है, और जिन लोगों से आप मिलते हो आप भी वैसे ही बनते हो। सो पॉइंट टू बी नोटेड। मैं सिर्फ एक क्विक मिनट लेना चाहूंगा। नेटवर्किंग basically is a vast subject. We will obviously not talk about it, but I would request people to go and look at it or maybe study, explore. Networking is not only about the friends you're meeting. Networking is not only about the company where you're working with your colleagues, right? Networking is there is a different type of networking which is called, one is called social networking. I really don't remember all those types, but it's very interesting concept. Social networking is there, then your colleagues, corporate networking is there. You should always strive to meet new people. I'm not saying that don't go and start meeting new people, but it's just that you do not restrict yourself. So for example, the executive program I'm doing, I kind of came out of my friends zone. I came out of my company and colleagues zone and actually moved into a different era altogether. Right? थोड़ा और जानने को Yes, मिलता है। correct. So networking is more like people whom you don't know, you meet them also. उनकी क्या सोच है। Yeah, absolutely. So any closing remarks, anything you would like to tell to our audience? Any closing remarks? Yeah, I think most of the points both we have discussed, and if there is any question which comes to in your comment, you can always let me know. But maybe at the end of it discussion, I'll probably just say, since you are really trying to help people, I will say that everyone, you should stick to basics, right? A lot of time, when I say stick to basic, does not really mean that you do not really venture out new boundaries, because a lot of time people venture out new things, right? And that's where they grow. But what I mean to say is that do not forget the basics, right? We talked about one important word like sangat, right? अपने parents बोलते थे भाई कुसंगति मत करो, and today we call it networking, but all these things are basics, so that we should not really forget. And one of the points, I'm just trying to conclude the discussion only. One of the points you talked about the struggles and all. So I personally believe, and that's why I was not really inclined, for the first time. I think everybody has their own struggles, honestly, right? And there are people I know, or I've heard of, people like studying in the street lights. At least I believe that I'm lucky that I really don't have to go through. I have seen when I was doing my study or my schooling, I have seen some news, maybe after that, I don't really remember the timing, somebody who does not really have hands. So they are writing papers with legs and they still top in the merit, right? So everybody has different struggles. I think it's more important that you acknowledge the struggles and you move over it. When you achieve something, do not sit on the laurels, move over it. It's the journey that will count, right? So these are the things, that's it. If there are any more questions, coming later on, I'm happy to answer. डेफिनेटली, लाइक इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, आपका दोस्त तो हमेशा बैठा ही है। मेरा पहला वीडियो मैंने सोचा था कि हाउ डिड आई बिकेम ए सीए, मेरी सीए जर्नी बताने का, बट देन आई थॉट यार तुम्हारा दोस्त तो हमेशा तुम्हारे पास में बैठा ही है, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी, अभी भी या बाद में भी आप मुझको कभी भी रीच आउट कर सकते हो। आपके कभी भी कोई प्रॉब्लम आए, किसी को सीए करना हो, मैं हमेशा बता सकता हूँ। सो आई थॉट कि किन्हीं को एमबीए करना हो या कोई एमबीए कर रहा हो, अच्छे कॉलेजेस बैग नहीं कर पाए हो, उनको भी जानना जरूरी है दैट दे कैन आल्सो एक्सेल इन योर करियर। सो विद दैट आई वुड जस्ट लाइक टू एंड दिस वीडियो हियर, and thank you very much for coming and showing and telling us your journey, and thank you to all the audience also that will be watching this video. And I would like to end this video with a quote with a boxer, I don't remember the name, but he said that I hope you chase those dreams with a burning desire and a burning fire. I hope you find happiness and prosperity. Much love. Signing off, the Yogesh. Bye bye. Thank you. Thank you.